जय राधा माधवा कुंज बिहारी माधवा जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपीजन बल्लभ गिरिवर हरि जय गोपीजन बल्लभ गिरिवर हरि यशोदनंदन व्रजतन रंजन यशोदनंदन व्रजतन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी राधा माधवा जय राधा माधवा कुंज बिहारी राधा जय गोपीजन बल्लभ गिरिवर धारी जय गोपीजन बल्लभ गिरिवर धारी यशोदनंदन व्रजतन रंजन यशोदनंदन व्रजतन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी राधा माधवा जय राधा माधवा कुंज बिहारी Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Jaya Radha Madhava Radha Madhava
Paramahamsa Pri Vrajagacharya Stotra Satya Sri Simar His Divine Grace Sirabhai Charanarvinda Bhakti Vedanta Swami Sri Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki ISKCON DBT Founder Acharyas Divine Grace Srila Prabhupada Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Samavata Bhakta Vrinda Ki Harinam Sankirtan Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jaini Tagore Primanande. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru to Sri Gauranga, all glories to Sri Prabhupada Ki. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavansya Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakanditam Scha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kansana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusuti Devi Pranamami Hari Priye Vansakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraya. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is a very means of conquest, let us first offer respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead, unto Nara, Narayana Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nasta Prayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Tamashloke Bhaktir Bhaviti Naistiki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering a service unto the pure devotee, all that is troublesome within the heart becomes destroyed practically to nil, and loving devotional service unto the Supreme Lord, who is praised with transcendental songs, becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Idam Bhagavatam Nama Pranam Brahma Samhitam Pranam Dhamma Samhitam Uttama Shloka Charitam Uttama Shloka Charitam Sakara Bhagavan Rishi Sakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Nishrayasaya Lokasya Dhanyam Swasyayanam Mahat. Dhanyam Swasayanam Mahat. This Srimad Bhagavatam, known as the Grantaraj, the king of all Vedic literatures, is the literary incarnation of God. It is compiled by the incarnation of God, Srila Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect.
Shri Krishna Chaitanya, Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Vasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Surabhyay Namaha. Surabhyaya Namaha. Om Surabhyay Namaha. Surabhyaya Namaha. Om Surabhyay Namaha. Surabhyaya Namaha. Mukham karoti vacharam pangum nangayate girim yat kripat maham bande Sri Gurum Dinataranam yat kripat maham bande Sri Gurum Dinataranam. Hare Krishna. Welcome to our Srimad Bhagavatam class, reading from first canto of the Srimad Bhagavatam, chapter number 2, entitled Divinity and Divine Service. आज के भागवतम के सत्र में आपका स्वागत है। हम आज पहले अध्याय पहले स्कंद के दूसरे अध्याय दिव्यता और दिव्य सेवा के अध्याय से पढ़ रहे हैं। And what text did we do yesterday? I think it was 33, I think. We are nearing the end. Actually, this is, yeah. So this is actually the last verse of chapter 2, text number 34. श्लोक संख्या 34 है, अध्याय 2 है, स्कंद 1। Bhavayati भाव्यति esha satvena lokan vai loka bhavana Leelabhataranurato Deva Tiryan Naradishu Bhavayatyesha satvena Lokan vai loka bhavana Lila Bhatarunarato Deva Tiryan Naradishu. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Sri Prabhupada Ki. Thus the Lord of the universes maintains all planets inhabited by demigods, men and lower animals. इस तरह से देवताओं में, मनुष्यों में और नीचे के योनियों में सब तरह के जीव जो हैं भर गए। Assuming the roles of incarnations, he performs pastimes to reclaim those in the mode of pure goodness. और भगवान जो इन जितने सारे अवतार लेते हैं वो शुद्ध सत्वगुण में रहते हैं। Purport.
there are innumerable material universes, and in each and every universe there are innumerable planets inhabited by different grades of living entities in different modes of nature. असंख्य असंख्य ब्रह्मांड हैं और एक एक ब्रह्मांड में गिनती के ज़्यादा जो है ग्रह हैं और उन ग्रहों में कितने तरह के लोग पशु पक्षी योनि सब रहते हैं जो अलग अलग गुणों में रजोतमो सतोगुणों में रहते हैं. The Lord Vishnu incarnates himself in each and every one of them and in each and every type of living society. भगवान विष्णु हर किसी में जाके हरे कृष्ण बोलो टेबल टॉप देखो हमको हरे कृष्ण भगवान विष्णु हर योनि में जाके जन्म लेते. He manifests his transcendental pastimes amongst them just to create the desire to go back to Godhead. वो सब में जाके लीला इसलिए करते हैं कि हर जीव में ये इच्छा हो भगवान के नाम जाने. The Lord does not change his original transcendental position, but he appears to be differently manifested according to the particular time, circumstances, and society. भगवान तो बदलते नहीं लेकिन समय के अनुसार व्यवहार के अनुसार स्थितियों के अनुसार वो अलग अलग रूप लेके अवतार लेते हैं. Sometimes he incarnates himself or empowers a suitable living being to act for him. कभी कभी वो किसी जीव को ही बहुत सारा शक्ति देके उसको अवतार लेने के प्रेरित अवतार जैसा बनाते हैं. But in either case, the purpose is the same. लेकिन दोनों ही स्थिति में एक ही उद्देश्य है जीवों को भला कैसे. And that purpose is that the Lord wants the suffering living being to go back home, back to Godhead. भगवान चाहते हैं कि जो दुख भोगी जीव है उसी तरह भगवत धाम चला जाए. The happiness which the living beings are hankering for is not to be found within any corner of the innumerable universes and material planets. जो सुख की तलाश जीव कर रहा है वो सुख पूरे अनंत अनंत ब्रह्मांडों में किसी भी कोने में जाके कहीं से भी दुर्लभ नहीं मिलेगा ही. The eternal happiness which the living being wants is obtainable in the kingdom of God. तो शाश्वत सुख है केवल भगवान के धाम में ही जाके प्राप्त हो सकता है. But the forgetful living beings under the influence of the material modes have no information of the kingdom of God. लेकिन जो भुलक्कड़ जीव है जो कि गुणों के अधीन है उसको कुछ पता नहीं कि भगवान कौन है. The Lord therefore comes to propagate the message of the kingdom of God either personally as an incarnation or through his bona fide representative as the good Son of God. तो इस तरह से भगवान क्या करते हैं तो खुद अवतार लेके भगवान के धाम के बारे में बताते हैं या अपने किसी एक भक्त को भेज के लोगों को इस बात का फिर से जानकारी देते हैं, याद दिलाते हैं. Such incarnations or sons of God are not making propaganda for going back to Godhead only within the human society. और ये जो भगवान के दूत हैं ये केवल आदमियों के बीच ही नहीं कर रहे हैं, जानवरों में भी कर रहे हैं. Their work is also going on in all types of societies amongst demigods and those other than human beings. वो देवताओं में भी कर रहे हैं प्रचार, मनुष्यों में तो कर ही रहे हैं और अलग तरह के लोगों में, पशु पक्षियों में भी प्रचार चल रहा है. So very interesting. बहुत ही रोचक है. In the text itself, it is nicely explaining that the Lord incarnates in the material world to bring back those who are in the mode of pure goodness. भगवान इसलिए अवतार लेते हैं कि जो शुद्ध सत्व गुण में हैं उनको उद्धार करना. It is not sufficient simply to be in the mode of goodness. One has to come to the higher level beyond. केवल सत्व गुण में रहने से नहीं होगा, शुद्ध सत्व गुण में आना पड़ेगा. Yes. And
and because the majority of living entities in the material world are heavily under the influence of the modes of material nature, therefore they do not so quickly go back home, back to Godhead. और दुनिया में जितने जीव हैं वो ज़्यादातर तो सतोगुण में भी नहीं है, रजोतमोगुण में है, इसलिए उनके भगवत धाम जाना जो है बड़ा मुश्किल काम है। Yes. So this chapter is actually dealing especially with different incarnations of the Lord. इस अध्याय में भगवान के अलग-अलग अवतारों के बारे में बताया जा रहा है। And in whatever form the Lord chooses to appear, in so many innumerable forms all over the universe, His purpose is the same. भगवान इतने सारे अवतार ले रहे हैं, अलग-अलग ब्रह्मांडों में ले रहे हैं, सबका उद्देश्य एक ही है, जीव को कैसे भगवत धाम ले जाएगा। That purpose is to begin the process of helping us understand that there is another place which is much better than this place. और वो उसका उद्देश्य यही है कि ये बताओ कि एक और भी जगह है, यही जगह नहीं है दुनिया में हर चीज, और इससे अच्छा जगह है, देखो जरा ट्राई करो। It's like if someone is some big personality is visiting a prison and telling the prisoners, actually there's a way that you can get out of this prison. जैसे कि बहुत बड़ा राष्ट्रपति जेल में जाता है और देखता है कि जेल में लोग हैं, तो उसको बताना पड़ता है कि जेल के बाहर भी दुनिया अच्छी है। This material world is compared actually to a prison house, jailhouse. जेल के जैसा ये भौतिक जगत भी जेल के जैसा ही है। And Prabhupada one time was giving a lecture describing how everyone in the material world, beginning with Lord Brahma, down to the most insignificant ant, is a criminal. He was, yeah. ब्रह्मा से लेके दुख चीटी तक सब जो है क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं। We are all criminals in the material world because we have actually, this is nicely explained by Srila Bhaktivinoda Thakur, the greatest offense, the greatest sin committed by the living entity is to have rejected Krishna. भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जीव ने सबसे बड़ा अपराध किया है कि कृष्ण को रिजेक्ट कर दिया, छोड़ दिया। And therefore, due to this rejection of Lord Krishna, we are cast here in the material world, and the end result is that we have to suffer. और इसलिए हम जीव को छोड़ चुके हैं, भगवान कृष्ण को छोड़ चुके हैं, इसलिए हम यहाँ को रहना पड़ता है भौतिक जगत में, और हमको दुख उठाना पड़ता है। So therefore, the greatest, that is why our acharyas explain that the greatest, if one wants to do good to others, the greatest welfare work is to actually give this knowledge of Krishna consciousness. तो इसलिए अगर हम किसी दूसरे का भला करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा भला हो सकता है कि भगवत गीता का ज्ञान उस व्यक्ति को हम दे दें। That is why great saintly persons, the acharyas, they are wandering in different places in different countries to give that opportunity to the conditioned souls. जो बड़े-बड़े आचार्य हैं वो पूरे देश विदेश में घूमते रहते हैं कि जीवात्माओं को वो संधि दे सकें जिससे कि वो भगवत धाम की प्राप्ति कर सकें। Yes. So that means that one of the important means or ways by which we give this opportunity is by establishing gurukulas. तो इस तरह से अगर हमको प्रचार करना है तो प्रचार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? गुरुकुलों की स्थापना करनी चाहिए। This is the standard traditional system or process by which from very early age one gets an opportunity to awaken, to begin to awaken within himself the desire or the understanding that, oh, there's a goal in life, there's another place I should go to. ये एक बहुत ही परंपरागत तरीका है जिसमें गुरुकुल की व्यवस्था, जिससे कि ये बचपन में सिखा दिया जाता है कि एक और भी जगह है, भगवत धाम है, जहाँ हमको इस जन्म के बाद जाना है। It is a wrong understanding to tell young people, no, you wait till later. Don't start chanting Hare Krishna now. ये बहुत गलत है कि बोलना कि नहीं अभी मत जप करो, बुढ़ापे में जप करो, अभी मत करो ये सब चीज। Many parents are afraid to allow their children. माता पिता बहुत डरते हैं कि बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। Because they are falsely thinking, falsely understanding
that their child will live till he's old, but there's no guarantee that he will live even one more day. उन माता पिता को लग रहा है कि बाप बच्चा जो है बुढ़ापे तक जिएगा, लेकिन क्या गारंटी कि एक दिन और भी जिएगा। Yes, and that is due to ignorance, due to not अज्ञान having. है, मूर्खता है लोगों का कि ये सोचते हैं कि बूढ़ा तक जिएगा। There's one nice example that comes to mind in the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu. चैतन्य महाप्रभु के जीवन में एक घटना घटी थी। When Lord Chaitanya Mahaprabhu, as we know, before he began the public chanting of the holy name, for 1 year he was performing kirtan privately in the house of Srivas Thakur. जब उन्होंने महाप्रभु ने अपना हरिनाम आंदोलन को सार्वजनिक किया था, उसके पहले 1 साल तक वो श्रीवास ठाकुर के घर में गुप्त रूप से सांकेतिक रूप से कीर्तन करते रहते थे। Only very special, selected, known devotees could attend this Sankirtan. केवल कुछ विशेष ही भक्त लोग थे जो इसको वहाँ उपस्थित होकर देख सकते। We can just imagine. So all the very close associates of Lord Chaitanya, they would gather together every evening. For a whole night they would perform Harinam चैतन्य Sankirtan. महाप्रभु के जो पार्षद लोग थे, जो सहायक सब थे, वो लोग पूरे रात भर वो कीर्तन करते थे। And the reason why only special selected individuals could attend was that the devotees, they were fully immersed in transcendental ecstasies. और क्यों बाहर वालों को नहीं बताया गया था, क्योंकि भक्त लोग जो हैं वो पूर्णतया दिव्यता के मद में चूर रहते थे, तो शायद नए लोगों को देख के थोड़ा आउट हो सकते। And Lord Chaitanya Mahaprabhu, everyone was understanding that the more we are there to assist Lord Chaitanya Mahaprabhu in actually expressing his full ecstasies. और हर व्यक्ति को ये लगता था कि महाप्रभु के इस अनुभव को हम लोग कैसे और बढ़ा सकते। So the devotees, they would start the kirtan and then it would increase and increase and the ecstasy would increase. Everyone was like completely absorbed in the chanting of the holy name. कीर्तन चालू हुआ और धीरे धीरे जो ऊंचाई के भगवान नाम के रस के ऊंचाइयों में पहुंचते जाते थे। So one time Lord Chaitanya actually he would go into complete like what is called he would lose external consciousness. चैतन्य महाप्रभु भाव में जाते थे और बाह्य चेतना पूर्ण रूप से लुप्त हो जाती थी। Simply completely fully immersed in transcendental sentiments and mellows. और पूरी तरह से आध्यात्मिक भावनाओं में जो है जग जाते थे। So one evening when this was taking place, एक संध्या को जब ये सब नाच गान भाव में महाभाव चल रहा था, after some time Lord Chaitanya started sensing or noticed that something was not quite right. और कुछ देर नाचने के बाद एक दिन की बात है, महाप्रभु को ऐसा लगा आज कुछ घर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ यहाँ गड़बड़ है। So from his internal consciousness he again came to external consciousness. वो आंतरिक चेतना से बाह्य चेतना में आ गए। And then he asked Srivas Thakur, did something happen in the house? निवास को पूछे तुम्हारे घर में कुछ हुआ क्या है? Then Srivas Thakur replied, actually something did happen about 4 hours ago. 4 घंटे पहले कुछ हुआ है। Then Lord Chaitanya asked him, what happened 4 क्या hours हुआ ago? 4 घंटे? Then Srivas Thakur told him that actually my son passed away. मेरा बेटा 4 घंटे पहले मर गया। Then Lord Chaitanya asked him, why you didn't tell me? तब बोला क्या नहीं 4 घंटे? Such a major thing happening and your own son passing away. तुम्हारा बेटा मर गया, बताना चाहिए। Then Srivas Thakur replied that because you were completely absorbed in dancing and in ecstasy, I did not want to disturb your ecstasy. चूंकि आप एकदम नाचने गाने में एकदम भाव विभोर हो रहे थे, हम उसको बताना नहीं चाहते थे। Not an ordinary father can do that. तो ये कोई साधारण पिता तो कर नहीं सकता। So immediately Lord Chaitanya Mahaprabhu instructed him, please take me to that place. बोले ले जाओ मुझे दिखाओ कहाँ हुआ है। So Lord Chaitanya, he went and of course he could hear the crying of all the women. सब स्त्रियों के रोना धोना वहाँ आवाज आ रहा था। They were all surrounded around the body of the son of Srivas Thakur. बच्चा मरा हुआ था, उसको सब तरफ स्त्रियाँ रो रही थी। So Lord Chaitanya, he came and he came very close, he knelt and he told the son, wake up, wake up. महाप्रभु चैतन्य आके मरे हुए बच्चे को बोले उठो
उठो। So that son who had passed away actually again came to consciousness. ये से उठ गया, बच्चा उठ गया। Everyone completely surprised, shocked. लोग आश्चर्य, हमारा बच्चा उठ के सो गया। And then not only he came to consciousness, but he started to speak. बोलने भी लगा, Why did you call me back? मेरे को क्यों बुलाया वापस? हाँ. जा रहा था। And he gave a whole Bhagavatam class. हम तो भगवान के धाम जा रहे थे, लोग बीच में हमको कह That रहे थे, I am an eternal spirit soul, मैं भगवान का दास हूँ। and I have had the great fortune of being born in the house of Srivas Thakur. मेरा तो भाग्य था कि इतना बड़ा महात्मा के घर में हम जन्म लिए। But by the law of providence and destiny, मेरे भाग्य में उतना ही जितना लिखा था उतना हम रहे। my time had come to leave this body. समय आया, मैं शरीर छोड़ा। So no one should be in undue anxiety. This happens. This will happen to all of us at some particular time. तुम लोगों को दुख क्या हो रहा है मेरे जाने का? तुम लोग नहीं जाएगा यहाँ से। And तुम so, लोग भी जाना होगा। so in this way, he gave a whole lecture on "I'm not this body," इस तरह से पूरा उसने लेक्चर दिया कि हम लोग ये शरीर नहीं है। and of course, the simple fact that he came to consciousness again was he got everyone's attention. So everyone was very much listening to his क्योंकि वो presentation. वापस जिंदा हुआ था, इसलिए सब लोग एकदम कान खोल के, आँख खोल के, एकदम आश्चर्य से देख देख के सब लेक्चर सुन रहे थे। Yeah. So unless one is cultivating this knowledge of Krishna consciousness, one cannot. Srivas Thakur, he was, although it was his son, he was not overly disturbed by that situation. श्रीवास ठाकुर था, हालांकि वो खुद का ही बेटा था, लेकिन उस स्थिति से थोड़े भी विचलित नहीं हुए। Yeah. So there are many important lessons in this pastime. यहाँ बहुत कुछ सीख सकते हैं। And one of them, especially for parents, is that this child is not my child. Actually, that soul has come in my family only for a short period of time. हमको एक चीज सीखना चाहिए कि अगर कोई बच्चा घर में दिए, समझे कि मेरा बच्चा है, ये एक आत्मा है जो मेरे घर में आके शरण नहीं है। Yes, and my duty and responsibility is to simply give a chance for that living entity to become a devotee of the Lord. जिम्मेदारी इतना ही है, जिम्मा इतना ही है कि इसको कैसे हम सही से कृष्ण चेतना तक पहुंचा सकें। And this also indicates that at any time, any of us, regardless of what age we are, we may be required to leave our body totally unexpectedly. इसको याद रखना चाहिए कि हमको कभी भी याद रखना चाहिए कि कभी भी शरीर छूट सकता है, उसके लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए। So therefore, in the Vedic culture, that system of Gurukul is there. वैदिक समय में गुरुकुल का सिस्टम होता था। So that parents, they have this knowledge, and from the very beginning, they give an opportunity for their children to have that knowledge also. माता पिता को तो पता रहता था भगवान के बारे में, और बच्चों को भी बचपन से ही ये मौका दिया जाता था कि भगवान के बारे में सीखो। Yes. That is the mission of Lord Chaitanya यही Mahaprabhu. चैतन्य महाप्रभु का मिशन That is the mission of all the different incarnations and acharyas, और ये आचार्यों का मिशन था, and that is also our mission. और यही हमारा भी मिशन है। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Something seems to be in the making. कुछ तो बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? बच्चे लोग करेंगे ना, और many kids are doing that. Many kids? Now many new names. Okay. सबको एक देने वाले हैं। हाँ। First day ना, he'll teach others. Okay. how to chant. Yeah, okay, nice. Yeah. मनोहर प्रभु भी आ जाएगा। मनोहर प्रभु, मदन। Okay, anyone have any questions किन्हीं का कोई प्रश्न or है? comments? टीका है, टिप्पणी है, प्रश्न है, शंका है, सब संशय है। Yeah, that's why this Upanayana is for that, yeah, for that purpose. जो लोग बच्चे लोग जो उनका उपनयन हुआ है, लोग यहाँ आके बैठ जाइए, करुणाकर को वो बताएंगे कैसे करना।
जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे। ईश्वर भक्ति राघव स्वामी महाराज की जय। So this is like